Bismillahirrahmanirrahim. Friends and colleagues, Assalamu alaikum and very good afternoon from London. Today we may have to speak a bit of English and bit of Urdu because we have a guest who has difficulty in speaking in Urdu, but he understands Hindi and Urdu. Right. Let me welcome Mr. Sank Sapan. He's from Kolkata, India. He's a political activist and correction, Shank Ghosh. Okay, Sank. Well, you can, my pronunciation is not that good, so and I don't want to. It's no problem. Okay, so welcome to the show. Thank you. Friends, as I said that he is an Indian and very patriotic feeling. He says a lot of things, of course, and we need to listen to him carefully and see what he says and whether they are applicable to Jammu and Kashmir or not. So we'll see that in a second. My other guest is Mr. Abbas Butt. He has appeared here many times. He is the chairman of Kashmir National Party, and he also speaks very well. Mr. Abbas Butt, welcome to the show. Thank you, Doctor. Right, floor is yours, my friend Sank. After abrogation of Article 3370 and Article 35A, there were a number of issues, number of problems. Some people said it was illegal to do it. Others said it was appropriate, and there were problems. And the floor is yours that you can explain. Okay, first of all, thanks for inviting me. As you know, I'm not a big speaker, so I might be having a bit of speaking trouble. But anyway, so we all know that in 1947-8, the accession treaty happened. Although I have seen numerous programs on this topic, I would like to little bit mention here a couple of basic or fundamental points. The accession treaty took place between Maharaja Hari Singh and no other than Louis Mountbatten. It was not signed by any Indian. So although I have heard several programs on this particular topic, people don't actually emphasize that. While Mountbatten already had a plan for plebiscite to please Jinnah, and Jinnah was never really happy about this plebiscite because he wanted to snatch it by force. The second point is that the accession, when Hari Singh agreed on the accession treaty due to the breaking of standstill treaty between him and Jinnah. So he was forced to accede to India so that India could send army to defend the whole state. At that point, he knew very well that India would be a republic and a democratic country. So and India has federal structure with all the states that slowly, the state which in the beginning or later, step by step, acceded to India. For example, Hyderabad. Hyderabad acceded much later, and now it's a state of India. And it's also very interesting to note why I'm mentioning Hyderabad, because it has also a troubled accession history. Perhaps you all know that. And even now, Hyderabad has been again splitted into Telangana and Andhra Pradesh. Because as world is evolving, it is and the population is growing, people have much focus on their surroundings. So they want much more care than to have a large province where the help of the provincial government is focused on a small periphery. So this is why it has also now become a pattern in India. Many large states like UP, Uttar Pradesh. Can we just focus on Jammu and Kashmir and its relationship with India and how 370 helped or created problems? And how is it, how people are facing, what people are facing now
I would say that after the dilution of 370 and No, abrogation of, you can, if you like, you can discuss the relationship which existed before that. 370. yeah, yeah. Well, according to 370, which actually took form in, I think, in 1952, the state of Jammu Kashmir had a separate flag, the right to give permanent residency, and no right for immovable property selling or buying, who is other than holding this right, the right to permanent residency. And because of that, JK has suffered a complete economic crisis and the growth of industrialization. Because no big industry like Tata or Reliance, who really wanted to make some industry there, they did not want to risk it, because if their employees would be working there for 30 years, they cannot buy even a property. Just giving you some example. And in this way, also there were many policies or packages of the central government was refused by Abdullah's Muftis and Congress government too. So I will show you a graph of GDP growth since, how it changed. Like you will see a big, just a second, I will show you the GDP graph here. Are you saying economic development after the abrogation of 370 and 35? Exactly. Yeah, I'm trying to figure out how to share the. In the meantime, let me bring Abbas Butt into the discussion. Abbas Butt, sir, you heard what our honorable guest had to say. Do you want to comment on what he has said, or do you want to add anything? Again, we are looking at advantages and disadvantages of the action which took place on 5th of August 2019. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं आपके मेहमान को भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ऐसे उनकी जो मैंने स्पीच स्टार्ट में की, मैंने कहा भाई मारे गए अब ये तो 18 की सदी में चले जाएंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा आधे घंटे में चीजों को कवर करना। अरे हम वापस आते हैं जनाब इस 370 पे। बस सर थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि आपका सर पूरा नहीं आ रहा। हाँ, यस, ठीक है। 370 और उसके साथ उसका 370 का जो बगल बचा है 35A। ठीक। अगर आप बुरा ना मनाए तो मेरे ख्याल में एक्ट 74 और स्टेट सब्जेक्ट जो इस तरफ लागू हैं उन पर भी थोड़ी थोड़ी बात कर ली जाए, तो मेरे नजदीक ये चारों चीजें एक जैसी मुझे नजर आ रही हैं। लेकिन सर, इन तमाम एक्ट और जो आर्टिकल्स हैं इनको समझने के लिए मेरे रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका थोड़ा सा आधे मिनट के लिए, इससे भी कम में कुछ एनालिसिस जरूरी है कि उसकी जोग्राफियाई सिचुएशन क्या है, उसकी कानूनी और गैर कानूनी हैसियत को समझना भी जरूरी है, और किसको वो अफेक्ट कर रहा है वो भी जरूरी है। तो ये जो 370 है इस वक्त कम मुझे तो अफेक्ट नहीं कर रहा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ठीक, हो सकता है उधर को अफेक्ट करने वाला हो। इस वक्त जो रियासत है वो 5 हिस्सों में तकसीम कर दी गई है। हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, किसी और ताकत ने किया, बार ये 5 हिस्सों में तकसीम है। एक है गिलगित बल्तिस्तान जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान का है। दूसरा आज़ाद कश्मीर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ अभी जबरदस्त किस्म के इलेक्शन हुए, वो सारी दुनिया ने देखे कि कहाँ से उठा के किसी को कहाँ से वजीर आजम बना दिया। एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के वजीर आजम को नॉमिनेट कर रहा है या अपॉइंटमेंट कर रहा है। ये दूसरा है। तीसरा है जो 5 अगस्त में आके उन्होंने चेंजेस की, इसको अब्रोगेट करने के बाद 370 को वादी और जम्मू को एक रियासत की हिस्सा बना दिया और लद्दाख को जो डायरेक्ट अपने टेरिटरी में ले लिया। और 5वां हिस्सा जो है वो है कुछ जो तोहफे के तौर पर चाइना को दिया गया था, और तोहफे के बाद बाकी हिस्सा उसने खुद भी थोड़ा सा हिंदुस्तान से छीन के एक हिस्सा तो वो बन गया। कोई भी एक्ट, कोई भी स्टेट सब्जेक्ट या आर्टिकल जो है वो पूरी रियासत को अफेक्ट नहीं करता। आते हैं हम 370 के बारे में। 370 के बारे में मेरा ताल्लुक यह है कि मैं एक कश्मीरी हूँ,
कश्मीर का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं आबाद हूँ इस वक्त अपने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से मैं इंग्लैंड में आबाद हूँ, लेकिन मैं ना हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ, ना मैं हिंदुस्तान के हिस्से को मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपके मेहमान ने जिक्र किया था भाई ऐसे एक दूसरे के साथ ना तो वायदे किए जाते हैं जिस तरह महाराजा हरि सिंह के हुआ था। सबसे पहले तो उसकी मजबूरी थी, अगर उसने हिंदुस्तान के साथ इलाक करना ही था तो बाकी 14 अगस्त 15 अगस्त से पहले पहले इलाक हो गए जिन्होंने करने थे, एक दूसरे छीन लिए गए। महाराजा किस इंतजार में बैठा हुआ था? 22 अक्टूबर तक किस इंतजार में था कि कबायली आए वो जूते मारे हमें? उन जूतों को बचाने के लिए हम कहीं फिर जाएं किसी से कहें और हिंदुस्तान हमारी मजबूरी से फायदा उठाए? ये महाराजा की मजबूरी थी जिसने वो दस्तावेजात पर दस्तखत किए। और दूसरी बात, जबकि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ अलाक होता है, ये मुल्क भी एक आज़ाद रियासत थी। 14 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान ने भी इसको एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया। अगर पाकिस्तान इसको एक आज़ाद रियासत तस्लीम ना करता तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर कभी दस्तखत ना करते। मायदे जो होते हैं वो दो आज़ाद रियासतों के, दो आज़ाद मुल्कों के एक दूसरे के साथ होते हैं। एक गुलाम के साथ दूसरे जो आज़ाद होता है उसका कोई मायदा नहीं होता। और उससे भी आम बात जो है, जो चीज़ें हिंदुस्तान के साथ मायदा किया गया उसमें सिर्फ तो 3 आइटम तो थे उनके, चौथा आइटम ही कोई नहीं है। वो अलाक किस चीज़ का हुआ? अलाक तो इसी सूरत में हो सकता था कि अपना आप वजूद खत्म करके आप हिंदुस्तान का वजूद बन जाते, उसको अलाक कहते हैं। यानी 90% आप अपना वजूद कायम रखें। किराए के सिपाही तो आज भी मिलते हैं कहीं कहीं के मुल्कों में। मैं मिसाल नहीं दूंगा किसी के नाम की, ना किसी का नाम दूंगा, लेकिन किराए के सिपाही मिलते हैं डिफेंस के लिए। इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं होती जो किराएदार आते हैं मैं अपने डिफेंस करने के लिए वही आप पर कब्जा कर ले कहेंगे ये मायदा हो गया है। पर ये बहुत एक लंबी बात है। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि 370 में एक कश्मीरी होने के नाते मैं कहता हूँ कि मेरा मुल्क एक आज़ाद खुमसार रियासत होनी चाहिए। हमें पूरा मौका दिया जाए, जिस तरह यूनाइटेड नेशन भी करारदादें भी कह रही हैं, उसमें भी कुछ मिसाइल हैं, लेकिन सिर्फ यानी दूसरे लफ्जों में मुझसे पूछा जाए, कश्मीरियों से पूछा जाए, सिर्फ कश्मीरियों का वोट हो उसमें कि मैं हम अपनी रियासत का मुस्तकबिल क्या चाहते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं मैं आज़ाद खुमसार रियासत चाहता हूं, तो मेरे नजदीक ये जो आर्टिकल 370 है इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं रहती। और दूसरी बात, आप अगर डिटेल में पीछे चले जाएं 35-40 सालों से आज ये आर्टिकल 370 सिर्फ कागजों पे मौजूद है। फाइलों का पेट हमने भरा हुआ है, फाइलों का सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन 35-40 साल से किसी एक शिक पे भी उस पर अमल नहीं हुआ। और बिलखसूस 89-90 के बाद तो कहाँ किधर चला गया था 370? क्यों 370 सामने नहीं आया? अचानक मोदी साहब ने 370 का बवेला कर दिया। और फिर ये कौन सा तरीका है? अगर आप लोग यानी हिंदुस्तान ये समझता था ये श्रीनगर जो है या ये जो उनके पास हिस्सा है वो उनका हिस्सा है, महाराजा ने उनके साथ मायदा किया था, तो कम अज कम 370 को तब्दील करने में, एबोर्गेशन करने में, ऐसा खत्म करने में जो कुछ भी इसने करना था, क्या वहां के अवाम से पूछना जरूरी नहीं था? कश्मीरियों से पूछना जरूरी नहीं था? कश्मीरी से पूछे बगैर ये तरीका कार ही गलत है सारा। और ये केस इस वक्त पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान में लटका हुआ है। क्यों? ये कितना बड़ा मुश्किल काम है कि इसका फैसला वहां के कोर्ट नहीं दे रही है। But sir, let me bring him again. Sank Sab, please. I hope Yeah, you understood what our guest Abbas Butt said. Did you understand everything? yeah. I have three objection, or actually I would ask him for a clarification. First of all, 370 actually existed, which is why the Kashmiri people were denied the Article 5 or 6, which gives the right for justice. That means before the Supreme Court of India. So many Kashmiris were actually deprived of that. So it is not very, very correct to say that 370 was existing on paper. No, there were many legal But I think consequences. Abbas Butt said many things, and one of them was that he wants independence. Another thing was that he says the Maharaja didn't want to join India or Pakistan. Exactly. It was I was because coming of to that. those 2 points. Yes. And So it was on accession. What he said is that it was on 3 subjects, namely
defense, foreign affairs, and Sure. communication. Communication, yes. Mm. So my question is, my first question, which I would like to know from him or from you or learn from both of you, is that what you guys think, what you people think, the force or the compulsion faced for signing the accession treaty, because he also said that Hari Singh did that because he was compelled. Okay. So what kind of compulsion he had? We can discuss that. You raise your points. Then let Mr. Abbas Butt come on that. So apart from this, do you have any other things to say? Well, टॉपिक है तो आप चाहते हैं तो मैं बोलता रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जो हमारे मेहमान हैं, चूंकि आए भी पहली बार हैं ये, तो इनको मैं ज्यादा चाहता हूँ कि आप इनको मौका दें। मुझे जब कहेंगे मैं बोलना शुरू कर दूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा जो है 35A, उसके मतलब भी अगर आप चाहें तो मैं 2-4 मिनट, क्योंकि मेरे नजदीक वो 37 जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 35A है एक्चुअली, तो उसको खत्म करना। अगर तो उसको खत्म इसलिए किया जा रहा है 35A को सारा मैदान खुला छोड़ दें कि जो दुनिया का बंदा है उसमें आके वो जमीनें खरीदे, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर इसलिए उसको इस वक्त जोश जज्बे के साथ लगाया जा रहा है कि अकलियतों को अकलियतों में तकसीम किया जाए, यानी वहाँ की जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर को, उसको अगर चेंज करने के लिए ये किया जा रहा है तो मैं उसकी भरपूर मुखालफत करूंगा, जहां तक हो सका मुखालफत करूंगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए है, क्योंकि लोग आते हैं इसमें इन्वेस्ट आपके मुल्क में करते हैं, तो मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। जब तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, let me ask him again. You cannot take only the profit. Can I ask you a question? Can I just bring it, try to give some directions? Wait, question what I asked was, after abrogation of these two articles, what people of Jammu Kashmir have gained, how they have benefited, and how they have lost? Okay, so the loss, I think your panelist, is talking about, but sure, and the gain you can explain to us benefits, yes, development. I tried to show you a GDP table. Have you got it, or? No, I haven't seen anything. No, I haven't seen. Okay, I shared the screen now. Can you read out that people can hear? Yeah. Okay. So in 2017-18, the GDP of JK state was 139, round figure. I'm talking about crore Indian rupees. And currently, actually, the year later, when the abrogation took place, it jumped to 160.5. 160.5. And in the current year, it has already reached 176 crore rupees of India. So you can see a quantum jump, because many construction has been, are undergoing, and a lot of investment in the tourism business are ongoing. Many hotels are under construction. And lately also Tata and Reliance, these two companies have agreed finally to come to make industries in various parts of JK. So this quantum jump will proceed further. So that is what I see. What you are saying is that after abrogation, GDP improved, yes, and more investment from India is coming. And you just mentioned two big names, Tata and Reliance. They are also, they are really market giants in that provided, so far, Tata and Reliance, they haven't invested yet. But those investments which have taken place, for example, the government of India or some others, has that improved the situation, helped the people, employment, etc.? Well, I give you one example. There were, before 370, there were many Indian doctors not really available to go to work there because their children had minimal rights. And if they had to work like 10 years, 20 years to serve the people of JK, and
They have no benefit there. Their children are deprived there. Why should he go there? So this kind of, I mean, this is just one concrete example. But So in this way, the nurses. Jammu Kashmir, I've got already too many doctors. Doctors of Jammu Kashmir go and serve in many other countries. And also there are specialists. So there is an exchange. So when एक छोटा सा सवाल आपसे कि आपका सोर्स क्या है जिसके मतलब आप बता रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान में भी ये बताया गया था जब इमरान खान साहब आए तो इनके जीडीपी माइनस पे चला गया था, लेकिन जो फिगर वो बता रहे थे वो माशाल्लाह पता चलता था कि जबरदस्त तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया जहान की कीमतें दालों से लेके आटे और चावल से लेके पानी की हर चीज की कीमतों में दिन दिन इजाफा हो रहा था। लोग भूख से प्यास से खुदकशियां कर रहे थे, अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट का एनालिसिस आ रहा था वो तो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा था। क्या आपको भी कोई इसी तरह का तो नहीं है? These figures are written in the governmental website. I didn't take it from any आपके गवर्नमेंट ने लिखा है वो दोनों अच्छा ही लिखा होगा ना। मैं अगर अब्बास भट्ट के बारे में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बड़ा खूबसूरत जवान था, हालांकि 72 साल मेरी उम्र हो गया, मैं आप पे कुछ जवान नहीं लिखूंगा। Then you do not understand the democracy of India. I'm sorry to say. मैंने बहुत सी डेमोक्रेसी देखी है। आपकी डेमोक्रेसी की पहली मिसाल मैंने देखी आपसे, पहली मिसाल आपको मैंने दी in Britain there is no even constitution. पर हम दोनों बोलते रहेंगे फिर ना मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगी बात। Let me come in here, Sangsab. You know what Mr. Abbas Butt is saying. You know, before taking decision on abrogation of 370 and 35A, the government of India should have taken a proper, you know, procedure. That was to consult the, you know, Constituent Assembly. Yeah. The question. Yeah. Exactly. But at that time, there was no. I mean, the local assembly was dissolved. And in JK, so they created that situation. They created that situation. Critics say they created that situation. Well, that you assembly. Cannot say that. You cannot say that. Why? I mean, politically, it is not correct to say it because why? Because the BJP and Mehbooba Mufti was running the local government, and then because of certain decision already a year ago, BJP withdrew the support. But here you have to remember BJP of the province, not the BJP of the center. So the parliament was dissolved because of hang parliament. There was no majority government to form the local assembly. So a year later, actually a bit more than a year later, there was no assembly to say yes or no to this referendum. So it went directly to the upper and lower house of Parliament of India. So in absence of we leave that. Let's the case in the Supreme Court of India. So we leave it there. But sir, what the gentleman is saying that एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई है जनाब संकश साहब के बातें सुन के मुझे एक और बात याद है। जब मैं नया लंदन में आया ना, मैं चूंकि स्टूडेंट था, अकाउंटेंसी का मैं स्टूडेंट था, तो एक क्वेश्चन आया, मैं इम्तिहान देने गया तो एक क्वेश्चन आया जिसमें कि ये गवर्नमेंट की जो फिगर्स आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, आर दे राइट और रॉन्ग? मैंने कहा यार ये यूरोप की गवर्नमेंट है। दिल में सोचा यूरोप की गवर्नमेंट है, इंग्लैंड के, ये तो बड़े सच्चे पक्के पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये तो नहीं गलत हो सकते। तो मैंने कहा यस करके मैंने उस पर कोई 3 पेज लिख दिए उसकी हमायत में, जो मुझे पॉइंट है मैंने लिख दिए। जब रिजल्ट निकला तो मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जब मैंने पेपर में कहा यार फेल कैसे हुआ, मैंने तो जबरदस्त किस्म का लिखा था। तो उसमें उन्होंने जो मुझे जवाब में दिया उन्होंने कि ये जो गवर्नमेंट की फिगर्स होती हैं, इन यूरोप की गवर्नमेंट की फिगर की बात कर रहा हूँ, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर जो रॉन्ग होती हैं। तो चीज है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मेरे भाई कोई ऐसी बात नहीं है और ना कोई सच बोलता है वहां पे। I want to ask you a question, a separate question. What he is saying is that big companies like Tata and Reliance, they are going to invest in Jammu Kashmir, and other investment is also there. Don't you were saying that if any investment which helps the people, you are in favor of that? Is that true? Definitely. So without foreign investment, you can't gain actually. You can't get the prosperity at all.
यही मैं पॉइंट कह रहा था 35A के मतलब के सऊदी अरब में चले जाएं आप, लोग वहां 20-20, 40 साल, 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन रहने का मकान उनका अपना नहीं है, बिजनेस उनकी अपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, सारा दिन रात मेहनत वो करते हैं उस धूप में प्यास में, और एंड में क्या होता है, शाम को आता है उनका पता नहीं मुसल्ली के क्या कहते हैं उसको, कुछ नाम है उनका कोई, वो आता है, वो गले से पैसे निकाल के चला जाता है, यानी कहते हैं सऊदी आता है कि जो मालिक होता है असल में। हाँ, जो सऊदी मालिक होता है उसका मतवली को नाम है जी, मैं कोई गलत नाम नहीं लेना चाहता, मसली कहते हैं उसको, मसली कह रहे हैं। और उनके मुकाबले में हम लोग यहाँ इंग्लैंड जो आबाद हैं या यूरोप के दूसरे हिस्सों में आबाद हैं हम लोग, हम जो लोग आजाद और फ्री हैं, जैसे एक अंग्रेज इन्वेस्टमेंट करता है, बेनिफिट उठाता है, इसी तरह हमारा आपने रहने के लिए मकान लिए मैं, और कोई भी ऐसा माशी या जिंदगी की कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें हम लोग मौजूद नहीं हैं, जिनकी ना अपनी ये जबान है, ना हमारा कल्चर इनसे मिलता है, ना हमारी नस्ल इनसे मिलती है, लेकिन हम लोग इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है या दिन ब दिन जो मुल्क इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि उनके ये रुकावटें नहीं हैं, और ये 35A रिमूव किया गया इस पर्पज के लिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हम इसको, मैं कम अज कम उसको खुशाइंद कहता हूँ, आई डेफिनेटली एग्री विद यू, लेकिन जो दूसरा खतरा है दूसरी तरफ कि जिस तरह पंडितों को हमने मार के भगाया गया था वहां से 89-90 में, और उसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सपोर्ट की थी कुछ पंडितों की, जो बड़े बड़े थे उनको अपने बम्बे और दिल्ली में आबाद करने के लिए, अगर वो काम यहाँ पर ना किया तो ये एक अच्छा स्टेप होगा, वी एग्री विद दैट, हम हर अच्छे स्टेप की हमायत करते हैं, हर बुरे स्टेप की मुखालफत करते हैं। संग साहब, I hope you understood him. What he is saying is that you understand. He's supporting. But he did not mention one critical point, that even though we are living in England or Spain or wherever, we have the right to buy our property if I have the money, if you have the money. But if an Indian, the same Indian coming from Maharashtra, Bombay, to work for 10 years in Srinagar, he cannot buy a property, immovable property, which is not acceptable. साहब, इसके जवाब में ओनली मैं कहूँगा, जब मैं आया था कश्मीर से लंदन, तो मेरे पास बोरी नहीं थी पैसों की भरी हुई, मेरे पास 10 पाउंड भी नहीं थे जब मैं यहाँ आया था, मैंने मेहनत की, यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट किया, तो हिंदुस्तान को भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि गरीब लोग भी अपने मकान रहने के लिए कम रिहायश खरीद सकें, इतना बड़ा अगर मुल्क है, सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, But sir, what this gentleman is saying, Sab is saying, people who go from India and work there, they have no right to buy the property. Yeah, that's right. If they have the capability, still they cannot buy. That was a definite discrimination. But discrimination. Yeah, I agree with you. But also, it was discouraging. It was what Mr. Abbas Butt also agrees with that. It was discouraging people to invest in Jammu Kashmir because of insecurity as well. Insecurity and insecurity in two sense. There was no security for their money, and there was no security of life and liberty. और ये काम किसका है? दिल्ली सरकार का है, इस वक्त जो उनके कब्जे में है। तो दिल्ली सरकार का काम है वहाँ सिक्योरिटी देना, उनकी जान की हिफाजत करना, मेरा तो नहीं है। Sank Sahab, there is an issue here, and this is the, I think, same question which Mr. Abbas Butt is asking, and I want to ask that as well. But it is the role of, and not only role, responsibility of the government, and in this case, New Delhi government, to provide security to people. Okay, but to buy is a separate issue. Okay, now they've got that right as well. But before that, people had no security. I can understand that, and they did not want to invest. But it was not my responsibility. It was the responsibility of the government. And New Delhi government failed to do that. Do you want to say anything on that? Yeah, because, you know, the problem was that because of unemployment in JK, with 10 rupees, if you could give to a boy, he could go in the street to pelt stone. I mean, I'm just giving a harsh example. Well, are you saying there's no unemployment in India? There's no. No, I'm saying unemployment in Kolkata. In JK, unemployment was so huge that you can buy stone pelters. So in this way, you know, I mean,
my personal experience when I was 18 years old in Calcutta, we used to have salwalas coming from Srinagar, and I used to ask them why you have to sell the shawl, sweaters here so far away. They said it is not my word, and that in Jammu or Srinagar, if they want to make a shop, they need investment, a little capital to buy a shop or to rent a shop, and they didn't have that money, which is why every winter huge number of the youth from JK used to come to our That cities. I understand. That I understand. Yeah. But you haven't answered my And now it has improved. It was It has now improved it was because responsibility of the government of India to ensure Yeah. that there is peace and stability, that people Yeah. can do business and tourists can go there. exactly, So it was exactly, not and Mr. Abbas Butt's this responsibility security or my was responsibility. breached. Sorry? Yeah, but this security was breached because of the funding coming from Hawala cases, funding coming from from Pakistan. Then there were guys like Gilani, Yasin Malik. Continue to name them. They were irritating or destroying the stability and the security issues. Abbas Butt, sir, you want to come on this? Abbas Butt, sir? हिंदुस्तान की फौज सिक्योरिटी अदारे इतने कमजोर हैं कि एक यासीन मलिक और एक गिलानी ने ये चार बंदों ने लेके इनको हाईजैक करके रखा हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो तबाही बर्बादी हो रहा है, लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। यानी इतना तो मेरे भाई गोश्त आप ऐसा ना कहें ना, ऐसा ना कहें। come on. पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फौज है, बड़ी मजबूत फौज है, और सिक्योरिटी अदारे भी बड़े मजबूत हैं। Then why America अगर वो in आपने 20 years could not जिनको do वो अपने anything अवाम in कहते हैं उनको Afghanistan? सिक्योरिटी दे कांट प्रोवाइड इट, then they should say okay bye bye, उनको बम्बे और दिल्ली चला जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर को अलग रख देना चाहिए, जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू वाले जाने, कश्मीर वाले जाने, वो जो करना चाहे वहां कर लें। अगर आप यानी उन चीजों पे जिन पे महाराजा ने दस्तखत किए थे, उन तीन में से एक सिक्योरिटी थी, अगर आप कहते हैं उसकी भी आप हिफाजत नहीं कर सके चूंकि गिलानी और यासीन मलिक वहां पर मौजूद हैं, तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। Yasin Malik, what do we do with Yasin Malik and Gilani Sahab? After all, they are citizens of Jammu Kashmir, leaders of Jammu Kashmir. Yeah. Okay, what So they're doing, if they were people have betraying disagreement. or perpetrating, even a couple of days back, one local guy was killed. So we cannot stop this, and we can see even the superpower America and together with NATO could not give any security in Afghanistan, because one thing is different: securing the border. This is one aspect, but the securing the inside, the inland, is completely different ball game, because here you don't know who is your enemy and who is your friend. So we are running out of time. Tell me अमेरिका what is का the way वही forward. Tell me what is the way forward. हिंदुस्तान का वही रोल अगर आप मान रहे हैं श्रीनगर में जो अमेरिका का अफगानिस्तान में, फिर तो मैं मान लेता हूँ। अफगानिस्तान अमेरिका का हिस्सा नहीं है। वो नहीं कहता, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि अफगानिस्तान मेरा हिस्सा है तो उसमें फेल हुआ सिक्योरिटी में। उनके आपने जो बेनिफिट है उसके लिए वो वहां गए थे, जो उन्होंने बेनिफिट उठा के चले गए। Butt Sahab and Sang Sahab, we are running out of time. Sang Sahab, tell me what is the way forward. We know what has happened. You have your views, Abbas Butt has his views, and I have my views on it. But what is the way forward to help people, that people can benefit, they can live in peace and stability? I said in many forums, and I repeat here, we have to reach out to, Indians, because I'm talking as an Indian, not as a Kashmiri guy. Indian people must reach out to the people of JK and also POK, Gilgit-Baltistan, and we have to restore the trust and secure the society together, because without people's trust, the internal security cannot be restored. And if we cannot restore the trust, the foreign parties like China and Pakistan, and there are many handlers and money givers, will continue to create the security threats and start the turbulence in the society. So we need a complete reunification
of JK with India, with the Indians, not the land-wise, but people-wise. Abbas Butt sir, what is your view on what he has said? मैंने What is the way बहुत forward? ही सिंपल है, मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि ये 2.25 अरब जो इंसान हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान और उस खित्ते में आबाद जो लोग हैं, उनकी भूख, उनकी प्यास, उनकी बददिली, उनकी कोई भी चीज कह लें, जो गुर्बत है उनकी, ये सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, इन्वेस्टमेंट के जो मसाइल में, वो उसी सूरत में हल हो सकते हैं जब कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करें। वहां पर अमन जो है ना, अमन तभी सूरत में कायम हो सकता है क्योंकि अमन की जो लाइन है ना, वो जम्मू कश्मीर में से होकर गुजर रही है। जब तक वहां अमन नहीं होगा, और अमन उसी सूरत में, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ छीन सकता है, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से कुछ छीन सकता है। 73 साल इन्होंने लड़ते झगड़ते देख लिए, अपनी उनके जो अवाम है वो बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, पानी साफ पीने का नहीं है दोनों मुल्कों में, खाने के लिए खुराक नहीं है, लेकिन एटम बम बना के हम बैठे हुए हैं। एटम बम किस लिए है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान से आप जम्मू कश्मीर को निकाल कर अलहदा कर दें, बाखुदा दोनों के दरमियान अमन होगा और हम उनके लिए ब्रिज का काम करेंगे। हमें अपनी मर्जी के वो मंशा के मुताबिक जीने दिया जाए, यही अमन होगा। यही इस अमन से हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां खुशहाली आएगी। इसके अलावा आप ख्वाब देखते रहें, 73 साल लड़ते लड़ते गुजर गए हैं, 173 साल और गुजर जाएंगे, ये मसला हल नहीं होने का जब तक आप कश्मीरियों की मर्जी इसमें इस्तेमाल न होगी। You heard him. What he's saying is that peace and stability. I understood. You heard him, yeah. So Yeah. he says, I want to. कलकत्ता वाले उर्दू समझ लेते हैं। That's okay. That's thanks to Bollywood, yeah. Yeah. So point here is that for peace and stability of the region, not only Jammu Kashmir, emphasis is that the Jammu Kashmir dispute must be resolved according to the wishes of the people. That is the message of Abbas Butt. Yeah. What do you say? But the people are not just few these political leaders. They who actually it is a very sad thing that in subcontinent the leaders all the time think that people are in their pockets, but it cannot be allowed anymore. If we have to reach out to people to know whom people are talking, whom they are delegating, then we have to also create new leaders whom people are trusting. Like there is an example like Mir Junaid, who made JK Working Party, and the people are really coming. So we cannot say 5 people says that we want this solution of JK, and that should be implemented. We need a democratic solution. We have run out of time. We've run out of time. श्रीनगर वाले तो नहीं ना ऑर्डर कर सकते कि मोदी साहब की जगह किसी और को बैठा दो। Thank you. आवाम ही चुनेगी लीडर जो चुनना होता है। I'm grateful to both of you for putting forward your point of view. People have right to decide and whether I agree with you or disagree with you. But fundamental point here is that people of Jammu Kashmir can decide who is our leader. And leader should not be appointed from New Delhi or Islamabad. If people must have the final say about the future of Jammu Kashmir, of course, we want peace and stability, we want prosperity. But for that, the fundamental issue is how to resolve Jammu and Kashmir. And it is Jammu Kashmir is not for Muslims only. It belongs to all of us, citizens of Jammu Kashmir, and we must decide what is best for us. I leave it at that. People, viewers, if you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. And goodbye from all of us. Thank you. Thank you.